It's coming in. It's a sensational twist to the couple that had gone missing in Meghalaya. The woman who had been missing along with her husband during their honeymoon in Meghalaya has now been arrested for his murder. Sonam Raghuvanshi from Indore was apprehended in UP's Ghazipur district after being found in a dhaba. And Sonam had been missing for 17 days following the discovery of her husband, 28-year-old Raja Raghuvanshi's decomposed body in a deep gorge in Meghalaya on the 2nd of June. The couple had travelled to the state for their honeymoon and were reported missing on the 23rd of May. Meghalaya's Director General of Police confirmed that Sonam, along with 3 other individuals, have been arrested in connection with Raja's murder. Investigators claim that Sonam had allegedly hired killers to carry out the crime, and authorities are continuing their investigation. My colleague Makrand is joining us on the broadcast with the details. Makrand, this is extremely shocking. Search had been on to find Sonam as well, while the family members of Raja had been claiming that he had been killed. What are the details? What have the police officials found? पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और अब गाजीपुर पुलिस इस पूरे मामले में सोनम को लेकर मेडिकल लेने पहुंची थी और इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे मामले को कि आखिर कैसे मेघालय से ये जो तमाम लोग हैं ये गाजीपुर पहुंचे हैं। और मेघालय पुलिस को बधाई दी है वहां के मुख्यमंत्री ने। साथ ही साथ मध्य प्रदेश पुलिस भी रवाना हो गई है इंदौर की इस पूरे मामले में पूछताछ करने के लिए गाजीपुर, क्योंकि सोनम 17 दिन से लापता थी। जो तमाम सबूत थे वो ये बता रहे थे कि जो राजा रघुवंशी की मौत हुई है उसके बाद जो सोनम है उसको तलाशने की कोशिश की जा रही थी और राजा रघुवंशी के मर्डर में एक बड़ा षड्यंत्र माना जा रहा था। तो अब जाहिर है कि ये षड्यंत्र धीरे धीरे खुलता जा रहा है। अभी फिलहाल जो जानकारी आई है कि सोनम रघुवंशी इस पूरे मामले में शामिल थी। कैसे शामिल थी, उसने क्या क्या घटनाक्रम अंजाम दिया, कैसे ये जो 3 लोग हैं ये उस मर्डर में शामिल थे, ये तमाम जो गुत्थी है अब सुलझेगी जब सोनम के साथ पूछताछ होगी पुलिस के द्वारा। और अब मेघालय पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस तीनों इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो गए हैं और जांच कर रहे हैं कि आखिर सोनम का किस तरह से इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट रहा है, क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है, शिलोंग क्यों आए थे, क्या पहले से ही षड्यंत्र किया गया था या फिर शिलोंग पहुंचने के बाद इसकी प्लानिंग की गई। तो ये सारे वो तथ्य हैं जो अब धीरे धीरे खुलेंगे, सामने आएंगे। फिलहाल बात यही है कि जो कपल लापता हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर से, वो गुत्थी जो है अब सुलझती जा रही है। पहले ये धीरे धीरे जो मामला था वो लगातार उलझता जा रहा था, क्योंकि जो राजा रघुवंशी है उसकी बॉडी मिल गई थी लेकिन सोनम लापता थी। तमाम जो परिवार के लोग और स्थानीय लोग हैं वो कह रहे थे कि हो सकता है कि किडनैप करके बांग्लादेश ले जाया गया हो या हो सकता है उसका कहीं और जाके मर्डर किया गया हो। तमाम सबूत मिल रहे थे, रेनकोट मिल रहा था। Speculation, several questions being raised, and the police officials were also looking at all angles. And now Sonam has been found in UP. In fact, Adeep is also on the broadcast with us. Adeep, what have the police officials found? Because initially, like Makrand was pointing out, the suspicion was, or there were fears that she also may have been killed. There were a lot of questions being raised on what could have happened. What have the police officials found so far? Well, definitely, Pratibha, see, there were many speculations that she might have fled somewhere or she might have been taken somewhere. But now the Meghalaya police has confirmed that Sonam, in fact, she was found in a roadside eatery in the Ghazipur, in the Nandganj police station area. The Meghalaya police contacted Uttar Pradesh police. In fact, they contacted the Ghazipur police and confirmed the location of Sonam Raghuvanshi, after which she was taken by the Ghazipur police, the Nandganj police. And in the late night hours, she was taken for medical checkup, and now she has been placed under the police protection in the one-stop center in Ghazipur district itself. Meanwhile, the Madhya Pradesh police is already on its route, and they're now going to take the custody of Sonam Raghuvanshi, and they're going to further interrogate her to ascertain the details of the case. But as of now, the Meghalaya police has confirmed that Sonam, in fact, was involved in the murder of her husband, and she was, in fact, missing for 17 days, and now the Uttar Pradesh police was informed by the Meghalaya police about her location, after which the Uttar Pradesh police has taken her into custody, and she has been placed in one-stop center in Ghazipur district. Pratibha. Okay, all right. And Amika, a lot of questions will also, of course, be revealed in the police investigations on was it all planned? Where were the killers hired from? Was it a pre-planned murder? How did she escape from Meghalaya to Uttar Pradesh as well, isn't it?
Anamika? Yes. Actually, if we talk about this particular story, Srimati Ibdishri Nongzring, the IPS of Meghalaya, she's the DGP of Meghalaya. She has confirmed that Sonam has, not even Sonam, she has, in our telephonic conversation, she haven't mentioned Sonam's name, but she has said that the killing contract has been given for Raja Raghuvanshi, and as we all know that Sonam, one of the two individuals from the Indore couple who had gone missing during their trip to Shillong, and they have found in Ghazipur, Uttar Pradesh, and along with Sonam, 3 other persons also have arrested, and even CM of Meghalaya, Conrad Sama, has said that one more person is involved in this, and Meghalaya police is waiting for that. And even one of the team of Meghalaya police is leaving for Ghazipur to have conversation, to have to talk with those particular individuals, those who are arrested in those particular area. And talking about Sonam, the main question is how Sonam came to Meghalaya, and she have planned such things. Now it's a big question whether Sonam's in case, how much it is strong or not. But then there is another thing. Had she planned it before even visiting Meghalaya? Where were the killers hired from? What was the planning that went into it? All of those will be revealed by the police officials. In fact, Times Now has also spoken to the DGP, and here's what he revealed about the investigations. Ma'am, regarding this Sonam incident, ma'am, she has been found in Ghaziabad, and it's been said that allegedly, as per the report, that she has been given the killer things to the other some of the persons. So how far it is true, ma'am? That's true. She have given killer contract, ma'am? Not her. Okay. Then who have given, ma'am? Amita, we will be issuing a press release. Just wait for that. Okay, ma'am. Thanks, ma'am. ये क्या सोनम जी जो जानकारी मिल रही है क्या आप लोग बरामद किया है या फिर उसने सरेंडर किया है सर? एक ढाबे से मिली है जी, वहाँ की पुलिस ने संपर्क किया था तो उनके सूचना के अनुसार रिकवर किया है वहाँ से ढाबे से। अच्छा। हाँ। और ढाबे वालों ने आप लोगों को सूचित किया उसके बाद गाजीपुर पुलिस ने वहाँ से उसको बरामद किया? ढाबे वालों ने नहीं, वहाँ की पुलिस ने कांटेक्ट किया। ओके सर। आया तो फिर हमारी पुलिस ने जाके वहाँ से इसको। और ये सर ये लगभग किस समय ये इसको उनको बरामद किया गया? यार अब ये एग्जैक्ट टाइमिंग्स वगैरह मेरा बोलना ठीक नहीं है, दूसरे पुलिस का मैटर है। जी सर। तो वही बेटर बता पाएंगे। अभी इसमें गाजीपुर पुलिस आगे ही क्या कार्रवाई कर रही है? अभी हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अभी इसको सेफ रखा है। ठीक है, उनकी वहाँ की पुलिस आ जाएगी, फर्दर कार्रवाई वही करेगी। मध्य प्रदेश पुलिस जब आ जाएगी? हाँ, मध्य प्रदेश मेघालय पुलिस का ही मैटर है, तो वो अपना लीगल एक्शन जो भी है वो चीज तो वो करेंगे। Adib, help us understand how the police officials reached up until this spot finding Sonam in Uttar Pradesh, because initially while there were fears on what could have happened to her, there were several statements made by some of the local residents, some CCTV footage from the hotel where the couple had been staying that helped the police officials in the investigations. Well, Pratibha, see, the Ghazipur police got a tip-off that Sonam Raghuvanshi is in fact spotted. She has been spotted in a roadside eatery in the Nanganj area of Ghazipur. Upon receiving this intel, the Ghazipur police confirmed it with the Meghalaya police, and after that they took her into her custody to keep her safe. They have placed her in the one-stop center where now the senior officials of Ghazipur police have already reached. And now they all are waiting for the Madhya Pradesh police to reach Indore, and after that the further proceedings will initiate in Ghazipur itself, since she has been rescued from the Ghazipur district. Now the Madhya Pradesh police will have to take her into her custody, and they'll also produce her in the local court. After that, they will be taking her back to Madhya Pradesh for further questioning. But the Ghazipur police has to say that they got a tip off that Sonam has been spotted in a roadside eatery, and after which the local police reached immediately at that particular eatery to take her into custody. Okay, all right, stay with us. In fact, we have also spoken
to the mother of Sonam Raghuvanshi, who has issued a statement following her daughter's arrest in connection with the husband's murder. In her statement, she expressed relief, saying that they are thankful that she has been found, adding that what's wrong or not will be decided after the investigations. धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया तो बस धन्यवाद मिल गई। तो बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है, बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। हम क्या कर सकते, अब जो जांच होगी जब पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। Makrand continues to stay live with us. And Makrand, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav ne bhi CBI judge ki he had made a demand for a CBI probe into the same as well. This issue had in fact gained prominence across the country as well after they had gone missing. Give us a timeline of what had happened and the information that is available about the couple. हाँ, अभी फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की थी उस दौरान दोनों जो लोग थे वो मिसिंग थे। अब अभी फिलहाल जब एक की बॉडी मिल गई उसके बाद से मध्य प्रदेश पुलिस भी लगातार संपर्क में थी, इंदौर पुलिस लगातार मेघालय पुलिस के संपर्क में थी। और इस पूरे मामले में अभी जब सोनम बरामद हो गई है और सोनम से पूछताछ की जा रही है तो जाहिर है ये एंगल निकल करके आ रहा है कि सोनम ही इस पूरे मर्डर में शामिल थी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी अपने तरीके से, क्योंकि एक गुमशुदगी जब शिलोंग पुलिस में दर्ज है और उसके बाद अब वो जो मामला है पहले मर्डर का चार्ज वहां पे लगा है और अब ये जब मर्डरर मिला है और ये पूरी घटनाक्रम का खुलासा हुआ है तो इंदौर पुलिस के साथ भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड क्या रहा है। यहाँ सोनम के परिवार से भी पूछताछ की जाएगी कि सोनम किस किस से मिलती थी, क्या पुराना बैकग्राउंड है, क्या उसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी पहले सोनम के परिवार ने राजा के परिवार को दी थी या नहीं दी थी। ये सारे वो सवाल है जो अब धीरे धीरे खुलेंगे, क्योंकि अचानक से कोई हुआ घटनाक्रम नहीं लग रहा है। ये पूरा जो घटनाक्रम है वो पूरे सोचे समझे षड्यंत्र के तहत किया गया एक मर्डर है। अब ये स्पष्ट हो चुका है और अब जब मर्डर स्पष्ट हो चुका है तो पूछताछ जो है वो केवल सोनम तक सीमित नहीं रहेगी। सोनम के जो जान पहचान के लोग हैं जो यहाँ पर उनके परिचित हैं, सबसे पहले तो ये पता लगाया जा रहा है कि वो जो साथ में जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो कौन है, वो क्या मध्य प्रदेश के ही हैं कि वहां के मेघालय के लोकल लोग हैं। तो अब सोनम किसी से संपर्क में थी ये बात निकल करके सामने आ चुकी है और सोनम ने संपर्क करके किसी से लगातार वो टच में भी थी ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है। तो मर्डर हुआ है, pre-planned murder. That's what the police investigations have revealed so far. We are awaiting a detailed statement, but there was a lot of mystery over what could have happened to the honeymoon couple, and it's a sensational twist with the wife now being arrested with 3 others. Investigations on whether she had hired these killers to get her husband killed. Makrand, Adib as well as Anamika, thank you for joining us with those details. We're keeping a track of the